Good afternoon, students. Our today's session is single-mindedly focused around the concept of flaw, which we often encounter while dealing with questions, or in other words, myriad of questions under the sectional head of critical reasoning. So today we have with us concept of flaw under critical reasoning. Concept of flaw. What is the exact meaning of flaw? How can we look forward to denote, how can we look forward to define the actual particulars of flaw as per its implication, as per its presence, or as per its what should I say, as per its very utility within the precise coordinate system of critical reasoning, or within the precise coordinate system of applied critical reasoning. This flaw is basically presence of an error in the logical reasoning of an author. Yeah, more accurately you can write it of the author. Presence of an error in the logical reasoning of the author. So whatever passage based constructs an author creates, whatever the passage based constructs an author creates in the process of giving expression to his thoughts on diverse topics, he does have certain inherent erroneous fragments in the entire superstructure, in the creation of the entire superstructure of his otherwise flawless reasoning. And these fragments of minute error presence could be identified as the flaw in passages. So this flaw basically refers to those minute errors in the logical reasoning of the author, not yours. Yours error, or the error committed in the course of general perception of the passage by you, is not to be factored in. Rather, the error which your author concerned has committed in the creation of the superstructure of the passage, and what have become an inherent feature of his reasoning, reasoning substructures or reasoning superstructures, considering that we conceptualize or we conceive the concept of flaw. So flaw is basically the presence of an error in the logical reasoning of the author. Now, how to detect flaw? Our question or our predicament further goes as follows. How exactly to identify the presence of flaw in the argument or the passage at large? Considering the nature of options that we generally get under questions featuring the concept of flaw, considering the nature of options that we generally get under questions featuring the concept of flaw, we
can easily highlight a pattern. We can easily highlight a pattern. We can easily highlight a patternistic trend, and that trend is all the four options that are contained under the question of flaw, they all have this tendency of featuring some or the other flaw in the context or out of the context of the passage. कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, the questions that you generally get under flaw based, flaw labeled questions, उनके जो ऑप्शंस होंगे, हर ऑप्शन में एक फ्लॉ होगा. सपोज ऑप्शन ए कंटेन्स फ्लॉ 1, ऑप्शन बी कंटेन्स फ्लॉ 2, ऑप्शन सी कंटेन्स फ्लॉ 3 एंड ऑप्शन डी कंटेन्स फ्लॉ 4. चारों ऑप्शंस में एक ना एक फ्लॉ होगा ही होगा. बट कौन सा वाला फ्लॉ हमारे मतलब का है, कौन सा वाला फ्लॉ इममटीरियल है, कौन सा वाला फ्लॉ पैरी मटीरियल है, ये हमें देखना पड़ेगा. विच वन ऑफ द फीचर्ड फ्लॉज interests us, concerned us, or in the overall relevance zone of our reasoning superstructure, whereas which one has to be discarded is to be decided based on the principle of relevance. यहां पे मैंने एक principle बोला, principle of relevance with the main idea of the passage. Principle of relevance with the मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इसको ध्यान से लिख लीजिए. कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है कि यूं तो अगर आप एक फ्लॉ का क्वेश्चन नॉर्मली हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्लॉ के क्वेश्चन में कोई 1 आउट ऑफ 4 वाला प्रिंसिपल नहीं चलता है कि 4 ऑप्शंस दिए गए, 3 बिल्कुल सही है, एक में फ्लॉ है, हमने पकड़ लिया. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही फ्लॉ होंगे. अब कौन सा वाला फ्लॉ हमारे मतलब का है और कौन सा वाला फ्लॉ कूड़ा है, कौन सा वाला फ्लॉ बम्प है, कौन सा वाला फ्लॉ ट्रैश कैन कंटेंट है, ये हमें पता चलेगा बाय इस्टैब्लिशिंग, बाय वेल हाइलाइटिंग, बाय वेल अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द कॉन्टेक्चुअल, नॉट कॉन्टेक्चुअल, इन द स्पेसिफाइड ऑन गोइंग क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट अंडर द पैसेज. हम जो हमारा ऑन गोइंग क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट है अंडर द पैसेज, उसको जब चेक करेंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला फ्लॉ, चारों में से कौन सा वाला फ्लॉ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. चारों में से जिस फ्लॉ का कंटेंट मेन आइडिया ऑफ द पैसेज के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज की बात कर रहा है, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज से संबंधित गलती की बात कर रहा है, से संबंधित फ्लॉ की बात कर रहा है. फ्लॉ का मतलब होता है एरर, और एरर का मतलब होता है गलती. जब गलती होती है तो गलती यहां पे किसकी, ऑथर की गलती, आपकी गलती नहीं. आपकी गलती पे बात नहीं होनी है, बात होनी है ऑथर की गलती पे. तो ऑथर ने कहां गलती करी है, कैसी गलती करी है. ऑथर ने तो चारों ऑप्शंस में गलती करी है. ऑथर के मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो चारों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं ऑथर की गलती है. बट कौन सी वाली गलती सबसे ज्यादा डिजायरेबल है हमारे लिए टू गेट आवर आंसर करेक्ट, to get our answer absolutely fructify in the form of a bullseye? For that it is necessary that we should be able to identify out of the 4 that single option that is most relevant, that is establishing the most sound relationship of relevance with the main idea of the passage. वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉ हो जाएगा, वही हमारा रेक्यूसाइट फ्लॉ हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस मच एंड यू वुड बी एबल टू गेट टू द रॉक बॉटम of the logical basis of the answer upon which stands this edifice of flaw-based questions under CR. So it was really nice addressing you on this, rather pinchy, this pinchy topic of flaw. And I hope that this must have gone, in a very fruitful fashion. This must have gone down in a very fruitful fashion with respect to the interests of the entire community of students who regularly spend time watching our videos and giving their comments on the overall utility of what what transpires behind the scenes. So thank you bachcho, thanks a lot, and I respect to address you all more often. Thank you, thanks a lot. Okay.